अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ hazekahali और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है व्हाई साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड डिस्ट्रॉयज नॉर्थ इंडियन फूड। से स्टार्ट करते हैं। In this video, I'll be showing you 5 reasons why South Indian food absolutely destroys North Indian food. But first, let's back up. For those of you not living in India, you may be surprised to know that North Indian food is quite different from South Indian food. What? South Indian food is considered to be one of the most well-recognized cuisines around the world. Renowned for its crispy dosas, coconut-infused curries, and an abundance of rice-based dishes. It's coming out of this giant rice cooker that would make any Asian lady in Korea jealous. But how have these flavors shaped the cuisine in Chennai, the capital of Tamil Nadu, in the southernmost state of India? Well, today, we're gonna find out. From a pancake bursting with savory curry goodness, challenging the best of any Waffle House menu. It became an iconic dish here. All the way to a biryani factory, churning out 15,000 pounds of rice every day. Every day, normally 5,000 to 7,000 kgs of biryani. Particularly in Sundays, we are making 10,000 to 12,000 kgs. So get ready, because we're taking a tour of the most iconic South Indian treasures from Chennai. We begin our journey with Chennai's favorite cheap breakfast dish, a donut that's stolen the hearts of Tamil Nadu's locals since its creation in 1951. மெது வடை வந்து எங்களுடைய ஹோட்டலில் நல்ல மூவிங் ஆகிற மெது வடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதுக்காக சொல்கிறோம்னா மேலே மொறுமொறுப்பாகவும் உள்ள சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இதில் ஹெல்த்தி ஃபுட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன். நாங்கள் நார்மலாக மெது வடைக்கு வந்து சாம்பார், சட்னி, அதாவது தேங்காய் சட்னி, கார சட்னி, சாம்பார் இப்படி வச்சு 3 வகையாக டோனட் வந்து மைதாவில் செய்வாங்க. இந்த சவுத் இந்தியன் டோனட் வந்து கோல்தால், அதாவது உளுந்தில் செய்கிறாங்க. Introducing medu vada. This famous South Indian breakfast is crafted using one of India's most highly prized and expensive legumes, the legume known as black gram, exclusively grown in the southern part of India and also northern Bangladesh and Nepal. But that is it, and it is very exclusive. To make this dish, start by blending the black gram soaked overnight into a thick batter. Next, add our 7-spice ensemble: black pepper, cumin, aromatic curry leaves, zesty green chilies, red onions, a dash of salt, and a hint of pepper root. Mix everything well. Then take a blob of batter and with a little thumb magic, sculpt it into a donut shape before dropping it into the fryer. This trick ensures our donuts cook up evenly, giving you that perfect crunch from the outside to the inside. Once they are perfectly golden brown, take them out and serve. Unlike its sugary cousin, this savory donut brings all the heat. It's a flavor journey, a pilgrimage of pleasure, where legumes and spices collide into a spicy tango, unleashing a pepper and curry explosion. And in the texture department, it's a tag team effort, a crispy coat embracing a fluffy cloud-like center. Fun fact, medu means soft, while vada is a type of Indian savory fritter. Now, introducing an irresistible sweet sensation that steals the spotlight at every public holiday or wedding in Chennai. Get ready for a sugar rush, because this egg-based delight is not holding back. I'm not kidding. It packs a whopping 10 pounds of sugar. When will you guys believe me? This thing is gonna be very, very sweet. Let's take a look. एक्चुअली मुट्टे मिठाई बोलते हैं कि मुट्टा मीन्स आके तमिल में एग बोलते हैं एंड मिठाई बोलने का मतलब कि उर्दू में जो बोलते हैं मिठाई, सो मुट्टे मिठाई एक स्वीट बोलते हैं इसे कॉमनली. वो टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे. बाद में खाने में मुझे दिल में लगा कि यही बिजनेस क्यों करूं. बाद में ये कॉन्सेप्ट उठा के मैं बिजनेस चालू किया. उसका नाम जो है सलीम स्वीट्स. Behold the muta mittai. This recipe emerged just over 6 decades ago, casting a spell on the taste buds of Tamil Nadu ever since. Now it's the star dessert at almost every local event. First things first, crack a couple dozen eggs into a bowl. Yes, I said dozen. Many dozens.
Next, the koya. It's a thick dairy ingredient, somewhat similar to dry ricotta cheese, made from dried whole milk or whole milk thickened on an iron pan. Carefully fold that into the egg. Follow that with all the sugar you can find at Indian Costco. Here, it was more than 10 pounds. While folding, add the magical ingredient. No, not more sugar, I'm talking about ghee, also known as clarified butter. Now place it over a gas stove and using a hand blender, mix everything well until it gains a custard-like texture. For the final step, glaze up a tray with a bit of ghee and pour in our eggy mixture. Bake everything for 6 hours and serve. Imagine a smoky, creamy egg custard with a seriously sugary kick. Blame it on the ghee or the irresponsible volume of sugar. But despite its simplicity, this treat is bursting with rich, intricate flavors that'll leave you craving for more. मुट्टा यानी कि अंडे। Mingle and work their magic. Finally, it's frying time. 15 to 20 minutes till it's crispy to the bone. This dish, it's the epitome of comfort food in Tamil Nadu. The pomfret fish, white, flaky, and oh so tender. After a solid 20 minutes in that oil, it's crispy on the outside and fall off the bone soft on the inside. Simple, yet delicious. And now, your cousin with a seafood allergy is dead. Get ready to dive into the ultimate dosa experience. We're talking a dosa stuffed to the brim with juicy mutton curry, an egg surprise, and all of it topped with even more spiced drenched mutton. This, my friends, could very well be the heavyweight champion of meaty dosas. Simmakal Konar Kadai is a restaurant which is originated in Madurai in a place called Simmakal around 1943. After 20 years of time, 1963 around, kari dosa specific dish has been invented. It is invented by Mr. Manikam Konar. His father, Mr. Sundram Konar, founded Konar Kadai. And so from then, almost 8 years it has been here. From that time, it has started the story of kari dosa. Let's dive into Chennai's culinary wonders, dosas and curries. But why settle for one or the other when there's a dish that masters both? Meet the mutton curry dosa, one of the city's most magical food creations. Step 1. Spread that dosa batter on the hot tawa. Step 2. Top it with a dose of rich mutton brain gravy. Step 3. Crack an egg right on top and mix it all together to create a fatal 15-car pileup of flavor in your mouth. Step 4. Enter the star ingredient, mutton sukka. If it came from a cow, we would call it brisket. But this is intensely seasoned chest meat that's been cooked low and slow. Flip it, let that meat caramelize, and you've got yourself a dosa fit for royalty. This dish is experienced in layers. First, a crispy, nearly violently seasoned mutton meat kicking off the flavor parade, followed by a creamy curry mixed with egg at the heart of it all. And to seal the deal, the final layer, a warm, slightly crispy dosa batter that ties everything together.
Before we put an end to this onslaught of South India's culinary excellence, let's shine a spotlight on the ingredient reigning supreme, not just here, but across all of India. I'm talking about rice. Basmati rice. And if there's a dish that's the ultimate rice ambassador, it's biryani. For our final escapade, we're making a pit stop at a biryani factory where they're churning out a mind-blowing 11 to 15,000 pounds of biryani each day. That's almost enough biryani to feed your mom. Our biryani style is Chennai style Muslim wedding biryani. Biryani was popularized by Muslims because they only brought it to the Tamil customs by the wedding biryani. They know about the cooking timing and dum biryani. That is only the specialty. So Muslims are using mostly dum biryani. That is a fine quality biryani compared with any other style. Dum biryani is most favorable for all the people. Our biryani is not so spicy compared with other biryanis, and our biryani is easily digestible. Biryani is probably one of the first dishes that comes to mind when you mention Indian cuisine. But did you know there are over 70 different varieties of biryani? Here they make it in the dum style. And that is dum spelled D-U-M. This style originated from the Arabic Peninsula, and it's more similar to a plow than other classic biryanis. Instead of layering in the ingredients as usual, they mix everything together in a huge pot. Start by frying up red onions with ghee in a giant cauldron. Once they're golden, add ginger garlic paste and diced tomatoes. For seasoning, add salt, turmeric powder, and red chili powder. Now it's time for the protein. Here, they like to wash the chicken thighs, season them with turmeric powder, then drop them in the main cauldron, followed by water and fresh coriander leaves. Finally, add the par-cooked rice and let it boil for another 45 minutes to complete the dish. When the cooking is finally complete and the lid is removed, you'll be greeted by something glorious. Despite its colossal production, this biryani is on a whole different level. Every grain of rice is infused with those aromatic spices, making each bite an absolutely blissful experience. Now that we've gone through the most iconic dishes in Chennai, showing off the amazing variety South India has to offer, it's time for us to pick our favorite. Was it the crispy medu vada, the eggy mutta mittai, the flavor-packed mutton kari dosa, the legendary fish fry, or the mouth-watering biryani? Today, the biryani stole the show for me. The mastery of crafting such delectable food on a grand scale and then serving thousands with affordable, high-quality dishes, well, that is just plain old worthy of my respect. So how about you? Which one of these Chennai classics would you try for yourself? Let me know downstairs in the comments below. And for more indulgent feasts for your senses, be sure to subscribe to Best Ever Food India. Thanks. Bye. Elevate your style. Oh my God. मतलब सीरियसली साउथ इंडियन फूड बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है. अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं सिर्फ साउथ इंडियन फूड की बात नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी वैरायटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, और मुझे लगता है मुझे अपना जुमला करेक्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है. जितनी वैरायटीज़ ऑफ फूड इंडिया में पाए जाते हैं, कोई और टक्कर का कंट्री ला कर दिखा दो. इतनी वैरायटीज़ मिल जाए अगर फूड की, तो चाहे वो वेज हो, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो नमकीन हो, जो भी हो, अपने आप में बहुत वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं. साउथ इंडियन अलग है, नॉर्थ इंडियन अलग है, फिर आप देखो कि डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट स्पेशल डिशेस हैं, लाइक राजस्थानी, लाइक गुजराती, लाइक महाराष्ट्र में मराठी, तो इस टाइप की डिशेस अलग अलग हैं. ढोकला वोकला जो है एक अलग डिशेस हैं, ठीक है. और ये महाराष्ट्र में आई थिंक मराठी गुजराती डिशेस हैं, लाइक पंजाबी अलग टाइप की डिशेस हैं, सिंधी डिशेस अलग हैं. तो मतलब बहुत लंबी सी चेन है. मुझे ऐसा लगता है वैरायटीज़ ऑफ फूड इतना है कि एक इंसान, मुझे लगता है एक जन्म में तो सारे फूड्स ना खा सकता है, ना टेस्ट कर सकता है, और ना ही एक्सपीरियंस कर सकता है सिर्फ एक जन्म में. मुझे लगता है उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे और उसके बाद ही जाकर उसका ये सपना पूरा हो सकता है. मतलब
जहाँ नज़र उठाकर आप देखें एक नई स्पेशलिटी आपको दिख रही होती है, एक नई चीज़ आपको दिख रही होती है जो आपकी नॉलेज में नहीं होती है, जो आपको पता नहीं होता है। अभी इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये बताया जा रहा था कि साउथ इंडियन फूड ने बीट कर दिया, साउथ इंडियन फूड ने डिस्ट्रॉय कर दिया नॉर्थ इंडियन फूड को। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, नॉर्थ इंडियन फूड में भी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत कमाल की डिशेस हैं जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और उनका वैल्यू और उनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, उनका जायका अपनी जगह है, ठीक है, वो अपनी जगह उनका जायका बरकरार है। हाँ, ये कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फूड एक तो मशहूर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में भी साउथ इंडियन फूड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि साउथ इंडियन फूड जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। अब जैसे एक डोसा है, एक सिंपल डोसा एक डिश है, ठीक है, जैसे लाइक दाल चावल है, तो दाल चावल बस दाल चावल है, दाल है, चावल है। लेकिन यहाँ पे डोसा की आपको लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी। भाई चिकन डोसा भी है, मसाला डोसा भी है, अभी एक नए किस्म का मैंने डोसा देखा जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। मतलब आपने चीज़ों को क्या बॉम्ब बना कर देना है कि देने वाला, खाने वाला या लेने वाला या पे करने वाला आपको दिल खोल के 100 रुपये का है तो आपको 200 रुपये दे दे, ऐसा जायका, ऐसी चीज़, ऐसी क्वालिटी। यानी एक लेयर आपको मीट की मिल रही है, फिर एक लेयर आपको अंडे की मिल रही है, फिर एक लेयर आपको क्रिस्पी सी डोसे की मिल रही है। मतलब डिफरेंट लेयर्स बड़ी। और मैं तो ये कहती हूँ हर किसी के बस की बात ही नहीं है ये मसाले ऐड करना, इसको पकाना, ये जो ट्रिक्स है, ये जो हाथ का जायका है जो इंडियंस के हाथ में पाया जाता है ना, कोई नाप तोल नहीं, मसाले ऐसे डाल रहे होते हैं भाई, उनका आइडिया, उनका अंदाज़ा अल्लाह माफ़ करे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई और उनकी टक्कर पे आ ही नहीं सकता। कोई बड़े से बड़ा आप ले आओ शेफ़ किसी और कंट्री का, मुझे नहीं लगता वो जो एक ऐसे करके मसाले डाल रहे होते हैं ना, और वो उनको आइडिया है कि ना ये तेज़ होगा ना ये हल्का होगा, ये परफेक्ट आएगा, ये परफेक्ट आइडिया जो होता है ना, सिर्फ मुझे लगता है इंडियंस में पाया जाता है। कोई और शेफ़ कर ही नहीं सकता, कोई और कुक कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो एक अलग सा अंदाज़ा है ना, एक मैजिकल सा अंदाज़ा है जो मैं अक्सर डिशेस में देख रही होती हूँ, जो बना रहे होते हैं, तो भाई जी ऐसे ना कोई स्पून ना वो, अपना आइडिया, अपना अंदाज़ा ही कमाल का है उनका। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये अपने आप में, इसको तो मानना है, इसको तो मानना ही मानना है। बहुत सारी डिशेस हम लोग भी जो है पसंद करने लगे, लाइक डोसा, मैं आपको बता रही हूँ बहुत रवाज हो गया पाकिस्तान में डोसा का, डोसा लोग कर रहे हैं। मोमोज़ हम लोग आप लोगों को देख के अब मोमोज़ करने लग गए, नहीं तो मोमोज़ का नामो निशान भी नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है। तो मोमोज़ की आप देखो इतनी वैराइटीज़ हैं, वैसे तो नेपाली डिश है लेकिन भाई वेरिएंट जो हैं इतने सारे, और जो हमने जाना, मैं ये कहूँगी बेसिकली हमने इंडिया वालों को देखकर ही जाना, भाई इंडिया में मोमोज़ सब करते हैं। एक पॉपुलैरिटी जो मिली है, मुझे लगता है रियल पॉपुलैरिटी अगर ये मोमोज़ को मिली है तो वो इंडियंस की वजह से मिली है, ये बोलना गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ है अपने आप में कि दुनिया भाई फॉलो कर रही होती है, फिर दुनिया भी चाहती है कि अब ये जो फॉरेनर्स हैं वैसे ये स्पाइसी नहीं खाते, लेकिन बिरयानी ऐसे शौक से खा रहे होते हैं बैठ के, इनको स्पाइसी से स्पाइसी बिरयानी खिला दो, ओहो माय गॉड क्या टेस्ट है, क्या ये, मतलब तारीफ़ें करते थकते नहीं हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने आप में मैं बोलूँगी बहुत अनदर लेवल की है। और इस मैं ये बोलती हूँ ऐसी वीडियोस के ना जो वाइंड अप में मुझे ऐसा लगता है अल्फाज नहीं मेरे पास कि मैं क्या कुछ ना बोल डालूँ अपने आप में सारी। अच्छा, मेडू वड़ा जो है ना वो मुझे कुछ नया लगा। ये तो मैंने देखा है कि इस तरीके से मतलब डोनट टाइप का होता है कुछ, लेकिन आज मुझे रेसिपी पता चली माश की दाल है, बेसिकली वाइट वाली माश की दाल होती है, उसके अंदर खड़े मसाले डालकर, और जिस तरीके से आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस, आई विल डेफिनेटली ट्राई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा वो देखने के बाद। ऊपर से क्रिस्पी सी लेयर, अंदर एकदम फ्लफ़ी सा, सॉफ्ट सा, एक उसका मतलब देखने में मटेरियल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो अपने आप में बहुत जायकेदार वीडियो बोलूँ, बहुत टेस्टी वीडियो बोलूँ, मतलब दिल में उमंग जाग गई है मेरे कि मुझे भी ये सब खाना है, जल्दी टेस्ट करना है। वो बहुत लकी लोग होते हैं भाई, मैं ये कहूँगी, अब तो मैं यही कहूँगी, वो विजिटर्स जो जाते हैं, विजिट करते हैं, डिफरेंट नई सी चीज़ें खाते हैं इंडिया जाके, भाई वो बहुत लकी होते हैं, हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो मेरी उम्मीद टूट रही है। तो आप लोग खैर आप मुझे बताइएगा, साउथ इंडियन फूड तो मैं बहुत सारे जानती हूँ, नॉर्थ इंडियन फूड जो है ना उनकी डिशेस का एक नाम आप लोगों ने कमेंट के ज़रिए मुझे नई डिशेस का नाम बताना है कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ताकि वो भी मेरी नॉलेज में आए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल और ऐसी चटपटी सी वीडियोस मुझे सजेस्ट करते रखें। अल्लाह हाफिज़।